चलो बताइए क्या करानी है आपको अभी? ये सर टेढ़ा है। कब सर्जरी हुआ था आपका? 1 साल हो गया लगभग। 17 मार्च नहीं, ये नहीं हुआ था। हाँ, मार्च में। उसका कुछ पेपर है, रिपोर्ट है, डायग्नोसिस? नहीं, मैं पूछा था लाना है कि नहीं, तो मना कर दिया। बोला कि मम्मी मना की। मैं अच्छा। मैसेज भी पूछा था शायद। ठीक है, अगर होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिलहाल तो यहाँ से सर्जरी कराया इन्होंने? जी, बाहर से ही किए थे। हाँ, वो एक्चुअली कट किए थे शायद बोन वगैरह को थोड़ा सा। अभी आपको फेस सही करानी है ना? हाँ, ये जो टेढ़ा है ये आगे पीछे है। ठीक है, स्कैनर करें। ठीक है, कर देंगे। पहले हमको स्कैन निकालना है एक। आपको है जो बोलते हैं हम फेशियल एसिमेट्री, मतलब जो फेस है, नहीं सिर्फ चिन का नहीं है, पूरा लोअर जॉ का है। काफ़ी कुछ जगह पे, यहाँ पे भी थोड़ा हड्डी ज़्यादा है, कम है, ये पूरा हाइट कम है, ये हाइट ज़्यादा है, ये यहाँ से बड़ा है, काफ़ी कुछ है। सिर्फ चिन नहीं है प्रॉब्लम। तो सिर्फ चिन करने से ठीक नहीं होगा, चिन करना होगा, एंगल करना होगा, अपर, मतलब काफ़ी कुछ करके फेस को बराबर लेके आना होगा। वो क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं आपको स्कैन देखने के बाद थोड़ी देर के बाद पूरा डिटेल्स बताएंगे। हाँ, लेकिन मेजर सर्जरी ही होगा, छोटे सर्जरी में नहीं होने वाला ये सब सीख। ठीक, और आपको 1 हफ्ता रहना पड़ेगा यहाँ पे सर्जरी के बाद, लेकिन स्टिच नहीं आएगा, कुछ ऐसा दाग नहीं आएगा, सब मैं अंदर से कर दूँगा। तो बाहर से स्टिच कुछ नहीं आएगा। थोड़ा डाइट का होगा, मतलब खाना पीने का थोड़ा हम बताएंगे कि मतलब लिक्विड डाइट ऐसा होना पड़ेगा 1-2 हफ्ता। कितना टाइम लगेगा रिकवर? 1 महीना कम से कम। 1 महीना। Facial asymmetry correction for this patient. It's also a revision because he's done the surgery elsewhere. You can see this incision. They've used a very big incision on the neck, and they've used this to correct some deformity on the jaw. Now, if you look at him carefully, he has issues that's basically involving this much of the face. So the lower third of the face clearly involved. We're going to be augmenting this side. I'm going to be reducing this side. I'm going to be using combination of genioplasty and orthomorphic variant of orthognathic surgery to try and sort this asymmetry for him. It's all going to be done from inside the mouth though, and it's probably going to take us 3 hours, 2.5 hours. Thank you. Hello everyone, here we have a patient who had come to us with a severe facial asymmetry, especially involving the lower jaw, and this is the 6th day post-operative, where we have done ankle osteoplasty on the banded side, and here we have to correct the asymmetry on the border and the on the body of the mandible. We have taken the entire lower segment 1 centimeter below and plated it. Now we just start with the dynaplast removal. थोड़ा दर्द होगा. शुदा प्रियो. So as you can see that there was his chin was deviated towards the right,
and there's still a bit amount of swelling, so that's why we cannot appreciate the symmetry that much. But since here you can see the right side of the mandible, it had a steep angle going upwards, so we have brought the entire segment down. Now there is still certain maybe 30% of asymmetry on the right side, but we have reduced quite a bit to make it more symmetric. Should have shown this. थोड़ा उस साइड हो.